Welcome to YouTube channel of Infowiz Chandigarh. Here is your video. Good morning friends, welcome to Infowiz, a software solution company. I'm the Guru Bhatia, your CAD technology trainer. Today we will discuss about our commands, annotations. In annotations today we will discuss about our next one, that is the dimension. For dimensions we should have to make some drawings, like सबसे पहले मैं लाइन कमांड लेता हूँ यहाँ से, ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट करने के लिए, जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, F8 then dimension digit that is 500 and bottom to top again it's 500 and two last one of videos it should be 300 and you should have to need to take a dimension of such this kind of thing. For that purpose you should have to click dimension, then click, just move your cursor, select your first point and then your second point. Go to there. It's a 500 and then like this. 500 ये अपने आप कमांड उठाता रहता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं. लाइक ये सर्कल ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हो. अदरवाइज हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है डिमेंशन को सेट करने के लिए, दैट इज डिमेंशन. हमारे पास मैं इनको डिलीट कर देता हूँ. जैसे मेरे पास लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन के लिए हमारे पास ऑप्शन है डिमेंशन में लीनियर, सेलेक्ट योर फर्स्ट पॉइंट देन योर सेकंड पॉइंट लाइक दिस. अब मुझे अलाइन लाइन की डिमेंशन करनी है, इसके लिए अलाइन लाइन पे क्लिक कीजिए, देन सेलेक्ट योर फर्स्ट लाइन एंड देन योर सेकंड लाइन लाइक दिस. अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं एंगुलर पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट योर फर्स्ट पॉइंट एंड देन योर सेकंड पॉइंट लाइक दिस. सर्कल में आप रेडियस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके साथ पे क्लिक कीजिए, क्या आपका रेडियस इज 300 for diameter. You have to take diameter dimension like 5-600. जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि इसमें साइज बहुत स्मॉल साइज में है, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास शॉर्टकट होती है डी एंटर, दैट इज 5 मिनट. आपके सामने टूल बार ओपन होगा, वहां से आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है. आफ्टर दैट अपने लाइन टाइप कैसी रखनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिंबल कैसे रखनी है, सिंबल इन द सेंस कि आपने एरो कैसे रखना है, एरो का साइज बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो. कर देता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो. लाइक यहाँ से अगर कलरिंग देना चाहते हो अपने टेक्स्ट को, रेड कलर दे देते हैं, हाईलाइट करना चाहते हो तो रेड भी देगा. एंड देन यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो, जस्ट मैं 20 अगर करता हूँ तो एंड दिस डिमेंशन स्टाइल थोड़ा आइडिया से फिर इस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे, ताकि आपका सेंटर से हो जाए सर्कल. प्राइमरी यूनिट में आपको यूनिट कौन सा चाहिए प्लस प्रोविजन के पॉइंट पर कितने डिजिट चाहिए एंड देन प्रेस ओके. एक पे सेट करना चाहते हो तो सेट करें, अदरवाइज डायरेक्ट क्लोज कर दीजिए. बाकी डिमेंशन सेटिंग ये आपकी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए. थैंक यू. Please subscribe our channel for more videos. Thank you.